Hey everyone, hi, welcome to the session, welcome to this class 12th biology sprint, and this is the second lecture, the second session of the sprint, and we're going to discuss molecular basis of inheritance in this particular session. So welcome guys. If you're here, do let me know in the chat box. हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं. I'll be speaking in a mix of Hindi and English, so don't worry if you do not understand Hindi guys, okay? So do drop that like button, hit the like, tell your friends that this session has begun, and we'll be waiting for people to come in till 3:30 exactly. Till 6 o'clock exactly. And when the clock strikes 6, at that time we will begin. Yeah. So guys, in the last session we had discussed biotechnology. If you have not seen that session, I will put the link of the playlist of the biology sprint in the description, and you can go and have a look. All right. So in this session, we're going to discuss molecular basis of inheritance, which is an important topic, very, very important topic for both the boards and the NEET examinations, right? So we're going to discuss all possible questions, a lot of questions I have here today, which we're going to discuss. Hi Extremo Gaming, welcome to the session. I hope you enjoy this session, okay? So the clock is almost about to strike 6 o'clock. When it strikes 6 o'clock, I will begin the session at that time, yeah? So till then, do let me know how your preparation is going in the chat box, how you all are preparing, how you all are confident about biology, and what about physics and chemistry if you're preparing for NEET. So I guess we can start in a few seconds. All right, fine. It's 6 o'clock exactly. We will now be beginning the session. So guys, keep a note that I hope you all have a book. I hope you all have a notebook, a pencil or a pen, maybe your textbook if you want, so that you can get reference. And I want you to answer the questions as we go on. At least thode points you can put in the chat box, so that way we can have a better interaction, and that way it'll be an interactive session and it'll help you also. So guys, start off without any further ado. Let's get started. Alright guys, so here we have the first question. This question comes from Lac Operon. Now Lac Operon is a very commonly asked question in the board exam. In the board exam तो हमेशा हर साल almost एक question Lac Operon से आता है, and NEET का भी ये थोड़ा एक favorite topic है. So let's go have a look at the Lac Operon in general, right? Before we attempt the question, let's have the Lac Operon idea. So you know, first before you look into Lac Operon, you will need to know what is an operon, right? You will first need to know what is an operon. Alright. You need to know what is an operon. So an operon is a collection of genes. It's a collection of genes. Okay. And these genes, these structural genes which code for different polypeptides, they occur together and they all work for the formation of different proteins. Okay, for the formation of different proteins through transcription and translation, but all these proteins work together for the metabolism of a single substance. So they work together for metabolism of single substance. Okay, now I'll try to explain what this means. Now, what we mean by metabolism of single substance is कि जितने एंजाइम बना रहा है वो सब एक सब्सटेंस के मेटाबॉलिज्म में लगे हुए हैं. मतलब कोई या तो लैक्टोज पे हो सकता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सब एंजाइम्स काम कर रहे हैं जो कि लैक ओपेरॉन में होता है. फिर TRYP ओपेरॉन होता है जो कि ट्रिप्टोफैन, जो कि एक अमीनो एसिड है, उसको ब्रेक डाउन करने में लगता है. तो ओपेरॉन में जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं, these different genes work together to form different proteins, and these proteins work together for the metabolism of a single substance. So that is known as an operon. ठीक है, that collection of genes is known as an operon. ठीक है guys, clear है? तो अब हम स्पेसिफिकली हमारे कोर्स में लैक ओपेरॉन की बात की गई है. We specifically are talking about the lac operon. We are more concerned about the lac operon. So what happens in the lac operon? In the lac operon, we talk about the metabolism of lactose. So we need to talk about the metabolism of lactose. Lactose is that single substance about which we are talking here. Okay, it is that single substance about which we are talking here. Okay, so let's try to understand the Lac Operon in detail structurally. Okay,
तो अब लैक ओपेरॉन में क्या होता है, देयर इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, ऑब्वियसली इट इज एन ओपेरॉन सो इट हैज टू हैव अ कलेक्शन ऑफ जीन्स। तो इस कलेक्शन में क्या होता है, देयर आर some segments, so there is the promoter region, there is an O region, and then from the O region there is a before that also, before the O region there is an I region, then there is an O region, then Z, Y and A regions. Okay, now let's try to understand what all these regions mean. Promoter region, well, this is an initiating part, this is an initiating part of the region of that particular operon. This I region is very important. ये जो I region है ये इसका कंट्रोलर रूम है। क्यों कंट्रोलर रूम है? क्योंकि इसकी एक्टिविटी इस जीन के या इस ओपेरॉन के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। This I word, this letter I stands for inhibitor. Now why does it stand for inhibitor? I will tell you. This O is your operator gene and this operator gene works like a gate. ये गेट का काम करता है, गेट की तरह काम करता है। गेट का मतलब क्या हुआ, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को इसके थ्रू पहले जाना पड़ेगा बिफोर इट रीचेस द Z, Y and A genes. Okay, the RNA polymerase which has to transcribe this particular operon and its genes, it has to pass through the operator gene before it can transcribe Z, Y and A to form the proteins required in lactose metabolism. Okay, उसके बाद ये Z, Y और A genes आ जाती हैं। Z, Y और A तीनों अलग अलग जीन्स हैं जो कि अलग अलग एंजाइम्स बनाती हैं, लेकिन ये सारे एंजाइम्स अगेन किसके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। तो Z बनाता है द मेन एंजाइम जो कि लैक्टोज को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सो दैट एंजाइम इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। इट इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। दिस इज द मेन एंजाइम which breaks down lactose to glucose and galactose. Okay, main enzyme. अब प्रॉब्लम इस एंजाइम के साथ ये है कि इसकी सेल में एंट्री इतनी इजी नहीं होती है, या इसकी सेल में आपको प्रोटेक्ट करके इसको रखना पड़ता है फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो इसको फैसिलिटेट कराती हैं टू मेक श्योर कि ये सब चीजें ना हो, दैट इट डजंट गेट ब्रोकन डाउन, इट कैन इजीली पास इनटू द सेल, ऑल दोस थिंग्स। सो फॉर दैट Y and A genes are present. और Y जीन बनाती है एक एंजाइम जिसका नाम है परमीएज। परमीएज वर्ड से ही समझ लो परमिशन। इट विल मेक द सेल मोर एक्टिव टू टेक अप बीटा गैलेक्टोसिडेज। इट विल टेल द सेल कि आप बीटा गैलेक्टोसिडेज अंदर ले लो। तो परमीएज वो काम करता है। एंड A forms an enzyme called trans-acetylase. Trans-acetylase again is a protective enzyme. It protects beta galactosidase from degradation. ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये पॉलीजीन अरेंजमेंट क्या है लैक ओपेरॉन का। अब आप यहां बात देखिए कि देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स व्हिच गेट कोडेड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स, सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हिच फॉर्म ऑफ सिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, it is polycistronic. There are multiple cistrons because all these gene segments are called cistrons or structural genes. They code for different polypeptides. So it is polycistronic, and because it's polycistronic, definitely you already know polycistronic systems are only present in prokaryotes. तो इससे बात क्या उमड़ती है, इससे बात ये पता चलती है कि जो ओपेरॉन सिस्टम होता है it is only present in prokaryotes. It is not present in eukaryotes. मतलब वो सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये पर्टिकुलरली जो लैक ओपेरॉन की हम बात कर रहे हैं ये इकोलाई में प्रेजेंट होता है। सो आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइस। ठीक है, इफ इट इज क्लियर डू ड्रॉप अ लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको कह रहा था कि ये इनहिबिटर की मेरे को बात आपको बतानी थी, इसको इनहिबिटर क्यों कहते हैं। अब हमें समझना होगा कि उसके लिए हमें समझना होगा कि ये इनहिबिटर जीन बनाता क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन डज इट मेक। तो देखते हैं, ये इनहिबिटर जीन एक नया प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब ऑब्वियसली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इट फॉर्म्स अ प्रोटीन कॉल्ड द रिप्रेसर प्रोटीन। सपोज इसको मैं रिप्रेसर प्रोटीन ऐसे डिनोट कर रहा हूं, एक स्मॉल सर्कल। अब इसे रिप्रेसर प्रोटीन क्यों कहते हैं? देखो गाइस, अगर सेल में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, अगर सेल में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो तुमको बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत है? नहीं है। परमीएज की? नहीं है। ट्रांसएसिटिलेज की? नहीं है। नहीं है ना, वेस्ट कर रहे हो आप अपना टाइम। तो इसलिए हमको रोकना है
RNA polymerase को from forming these proteins by transcription. We have to stop RNA polymerase from transcribing these genes so that these proteins are not formed at that instant because lactose is not there. तो हम क्या करेंगे? To make sure that happens, this repressor protein will be formed independent when there is no lactose. तो जब lactose नहीं है, ये repressor protein form होगा. Repressor protein तो हमेशा form होता है, but जब lactose नहीं है, तब ये repressor protein क्या करता है? This goes and closes the gate. Now, what is the gate? The operator is the gate. So it goes and binds to the operator. जब ये ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है, गेट बंद हो गया. नाउ द गेट इज क्लोज्ड. सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट पास थ्रू द गेट एंड कैन नॉट ट्रांसक्राइब दीज जीन्स. एज अ रिजल्ट दीज प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीज प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड. सो द मेन पॉइंट हियर इज दैट दिस जीन forms a protein which actually stops the transcription of this operon. And that is why it is called repressor protein, because it represses, and that is why this gene is called an inhibitor gene. ठीक है guys, clear है? अब अगर lactose present है तो क्या होता है? Then you need beta galactosidase. So if lactose is present, let me denote that with another color. Now suppose lactose is present in the cell. तो अब now you need beta galactosidase, permease, transacetylase so that it can be metabolized. So what do we do? Now this lactose molecule will go and bind with the repressor protein so that it does not go to the operator. So now it will not close the gate. अब लैक्टोज क्या करता है? चल तू मेरे साथ आजा, मैं तेरे को एक चक्कर लगा कर लाता हूं. तो तब तक के लिए आपका जब तक लैक्टोज वहां है सेल में, तब तक के लिए आपका ओपरॉन खुला है, गेट खुला है. RNA polymerase can transcribe and these enzymes can be formed for the metabolism of lactose. This occurs till the time lactose is present in the cell. जब खत्म हो गया, फिर से repressor protein अकेला हो गया तो वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर लेता है. So I hope this part is absolutely clear guys. ठीक है, I hope ये part आपको Lac Operon का बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है. ठीक है guys, clear है? All right, I hope you are clear with it. Do let me know in the chat box if you are. Now let's look at the question. अब तो मैंने आपको ऐसे explain कर दिया कि आप question भी answer कर सकते हो. So why does the Lac Operon shut down sometime after the addition of lactose in the medium where E. coli was growing? So I already told you when will it shut down. Even though lactose is present, it will shut down when lactose gets used up, completely broken down. So why does the Lac Operon shut down after some time? Because now the lactose has completely broken down into glucose and galactose, and as a result what happens is that this repressor protein no longer has lactose to bind with it, so it goes and binds with the operator to shut off the Lac Operon, and hence beta galactosidase is not formed. Okay, now that's the first part of the question. The second part of the question is why is a low level expression of the Lac Operon always required? अब हालांकि लैक्टोज खत्म हो जाएगा सेल में, फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन Lac Operon का चाहिए होगा. ये क्यों चाहिए होगा? ये इसीलिए चाहिए होगा क्योंकि ये जो परमिएज है, it facilitates the entry of lactose into the cell. It facilitates entry of lactose into the cell. अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है सेल में, बिल्कुल भी नहीं है, तो लैक्टोज सेल में अंदर आ ही नहीं सकता. That is why to make sure that lactose can enter the cell at least, very low level expression of the Lac Operon is always needed. Otherwise lactose will not be able to enter the cell. I hope this is absolutely clear guys. ठीक है? श्रवण 10th का सेशन is at 8 o'clock. Can you go and check the community tab? It is at 8 o'clock. Alright guys, I hope it is clear. Extremo Gaming ने क्वेश्चन पूछा है why there are two promoter regions in the NCERT diagram. वो भी ठीक है, वो promoter region उन्होंने एक यहां भी बना दिया है. Well, उसका रीजन ये है श्रवण एक्सट्रीमो गेमिंग, बिकॉज इसके बाद भी कुछ RNA, इसके बाद भी कुछ DNA हो सकते हैं, कुछ ओपरॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि और ओपरॉन्स आगे हो सकते हैं, इसीलिए दे आर जस्ट डिनोटिंग दैट दिस इज जस्ट बिटवीन दिस इज जस्ट वन स्पेसिफिक रीजन. It has no special significance with Lac Operon. It is just showing you that this is just one cistron, one particular region. इसके अलावा भी और regions हो सकते हैं.
Hope that's clear. Extremo gaming उसका as such Lac Operon से कोई लेना देना नहीं है. So this question I hope it is clear. Do let me know if it's clear in the chat box, guys. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. पूरा Lac Operon अब आपको समझा दिया गया है. अब एक चीज मैं थोड़ा भूल गया हूं कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, बिकॉज इट इज नेगेटिवली अफेक्टिंग द ओपेरॉन फंक्शन एंड बिकॉज द इनहिबिटर जीन फॉर्म्स अ नेगेटिवली रेगुलेटिंग प्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये उस सिस्ट्रॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, उस पर्टिकुलर ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, उसको बोलता है तू चुप हो, तू चल मत, तू चुप हो. इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. द रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन. एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी होती है, बट दैट इज बाय अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए guys, this question comes from a mixture of genetic code and RNA. Let's have a look at the question. The question says, construct a complete transcription unit with the promoter and terminator on the basis of the hypothetical template given below. So if you just see, this is the template given. Now it is going in one direction. So I already told you it always runs from 5' to 3' direction. That means if this is A, this is T, this is G, this is C, again T, G, C, A, T, A and then C. ठीक है. अब ये कौन सा स्ट्रैंड है? Is it template strand or is it coding strand? This is the question. Is it a template strand or is it a coding strand? What do you think, guys? Is it a template strand or is it a coding strand? थोड़ा सोचिए कौन सा strand? This is the template strand. Please remember, this is the template strand. क्यों? क्योंकि it is from 3' to 5' end. So 5' to 3' will be in this direction and 3' to 5' template होता है, 5' to 3' coding होता है. So this is 5' to 3' and this strand is going to be your coding strand. Correct? So RNA transcription जब होती है तब क्या होता है? This 5' to 3' is not transcribed. What is transcribed? 3' to 5' is transcribed, and that is why you have to make the complementary strand of that particular coding, of that particular template strand to get the coding strand. So A will be T, this T will be A, G का C होता है, C का G होता है, T का A होता है, C का G होता है, C का फिर से G होता है, A का T होता है, T का A का T, C का G होता है. Hope this is clear, guys. So this is your DNA strand. And now इसके पहले इस साइड पर क्या होगा? इस साइड पर होगा प्रमोटर रीजन, बिकॉज यहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. और इसके एंड में क्या होगा? इसके एंड में होगा टर्मिनेटर, बिकॉज यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बंद हो जाता है बाय अटैचिंग विद द रो फैक्टर. क्योंकि यहां पे सिग्मा फैक्टर अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहां रो फैक्टर अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है. सो दैट इज व्हाई दिस इज द whole sequence of the DNA strand which is to be transcribed, and this is known as transcription unit. If you remember, this is known as the transcription unit, जिसमें 3 units होते हैं: promoter, terminator, and this gene which is to be transcribed, which is your structural gene. This is your structural gene which is to be transcribed. Hope it is clear, guys. Hope this is clear. And this is your transcription unit. Hope it's absolutely clear. तो आपको पता है RNA polymerase will transcribe the template strand and not the coding strand. Hope it's absolutely clear. चलिए guys, let's now move on to part B. So this was your part A. Let's now move on to part B. इसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, so I'm just rubbing this off. Part B देखिए. Write the RNA strand transcribed from the above transcription unit along with its polarity. So guys, quite straightforward. This was your 3' to 5' end, right? So what are we going to do? We are going to make the complementary sequence of this particular sequence given, except
will replace all the thymine with uracil because RNA में thymine नहीं होता, uracil होता है. उसकी polarity होती है same as that of the coding strand. You remember it is the same as that of the coding strand, 5' to 3', and even the sequence is the same as that of the coding strand, except that it's instead of thymine you have uracil. So you're going to put the complementary ones. A का होता है T, but T नहीं डालेंगे, हम U डालेंगे. T का A होता है, G का C होता है, C का G होता है, A का T होता है, but हम उसको U में रिप्लेस कर देंगे. T का A, G is C, C is G, A is again U, T is again A, U and G. This is the sequence, guys. Hope it's absolutely clear. The polarity is very straightforward, 5' to 3', the same as that of the coding strand. And this is the sequence, which is the same as that of the coding strand except for thymine. Thymine will be replaced with uracil. I hope this is absolutely clear. This question. This is from your CBSE sample paper for 2019. Hope it's absolutely clear, guys. Let's now move on to the next question. Chaliye, this question comes from genetic code. Now, genetic code is another very important part, especially for your NEET and your board examinations. Let's see. So, there is a table given to us and they are asking us to tell them to fill in the blanks. We need to fill in the blanks for them which are given to us. So, pehla wala dekhiye. This PHE stands for phenylalanine, which is an amino acid. VAL stands for valine, which is another amino acid. Now the DNA code in the gene is given, that is AAA and valine ke liye CAC. So what will be the corresponding codon in mRNA? It's quite straightforward. So agar DNA code in the gene is AAA, so what will be the codon in mRNA? क्या होगा भाई कोडॉन mRNA में? mRNA में it will be the complementary codon. It's going to be exactly complementary to this region, obviously because जो RNA बनता है that comes from the template strand. तो first वाला जो AAA है उसका complementary बनाना है, क्या होगा? TTT. But no, this is mRNA and in mRNA there is no thymine, there is uracil instead. So instead of TTT, you will write UUU. It is complementary to A, that's it, straightforward. Okay? Now, anticodon in tRNA. इसका anticodon क्या है? It's going to be the complementary of that in the mRNA. So UUU is present in mRNA. इसका complementary बना दो, क्या होगा? AAA. So this will be the anticodon sequence. Absolutely perfect. That's going to be your anticodon sequence. Now, if you see, the anticodon sequence is the same as that of the DNA. The DNA sequence and the anticodon sequence are the same. So it's clear, quite straightforward. Obviously, because complementary hai. This is complementary to this and this is complementary to this. So it's a cascading complementarity. Hope it's absolutely clear, guys. All right, let's now move on. Sorry, this was your third one, huh? Not your second. Let's now move on to the second one. Second one is for valine. Valine के लिए कोडॉन बनाना है, तो CAC का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा? C का होता है G, A का होता है U, and C का फिर से G, GUG. That's it, straightforward. And fourth one is going to be GUG का कॉम्प्लीमेंट्री, तो guanine का होता है cytosine, uracil का adenine, guanine का cytosine. That's it. Absolutely done, absolutely perfect, guys. Hope it's absolutely clear. All right. Let's now move on to the next question. Okay, this was your part A. Let's now move on to part B. Part B कहता है, a polypeptide consists of 14 different amino acids. So look into this. There are 14 different amino acids, and if there are 14 different amino acids, it means there are 14 codons. Correct or not? There are 14 codons क्योंकि one codon codes for one amino acid. So अगर एक अमीनो एसिड है तो एक कोडॉन, तीन अमीनो एसिड है तो तीन कोडॉन, 14 अमीनो एसिड है तो 14 कोडॉन. तो अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है पार्ट 1, हाउ मेनी बेस पेयर्स मस्ट बी देयर इन द प्रोसेस्ड एमआरएनए. प्रोसेस्ड एमआरएनए मतलब अगर कोई भी बेस हटाना है, काटना है, तोड़ना है, कुछ भी करना है, अभी जो है वो हो चुका है, अब आपको फाइनल एमआरएनए की बात करनी है. सो हाउ मेनी बेस पेयर्स मस्ट बी देयर इन द प्रोसेस्ड एमआरएनए दैट कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड. So what is the processed mRNA? Processed mRNA में कितने बेस पेयर होंगे? आपको पहले देखना है कि कोडॉन कितने हैं. 14 कोडॉन हैं. हर कोडॉन में 3 बेस पेयर. तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज सिंपली गोइंग टू बी 14 कोडॉन्स टाइम्स द 3 बेस पेयर्स per codon. So 14 into 3 is 42 base pairs. There are 42 base pairs. Hope it's absolutely clear, guys. There are 42 base pairs.
Let's now move on to the second question, or the second part of this question. How many different types of tRNA are needed for the synthesis of this polypeptide? Now, I already told you, and you already must know, that tRNA are unique for each amino acid. राइट तो हर एक अमीनो एसिड के लिए आपका टीआरएनए यूनिक होता है, मतलब हर एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए होता है, और इसीलिए क्योंकि यहां 14 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, the number of tRNA molecules are going to be equal to the number of amino acids, right? And that is why the correct answer is 14. There are going to be 14 tRNAs present for the synthesis of this polypeptide. So the answer is 14. Straightforward, classic, easy question from genetics. Hope it's absolutely clear. Okay, guys? All right, let's now move on to the next question. चलिए क्वेश्चन देखते हैं गाइस. ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, and this comes from DNA replication and DNA transcription. It says the first part is mention 2 events where DNA is unzipped. तो DNA कैसे exist करता है? DNA exists as a double helix structure, something like this. It exists as a double helix structure, and since it exists as a double helix structure, if you want to duplicate any one strand, if you want to transcribe any one strand, then obviously you will need to unzip it. You will need to separate those strands, and between these strands there are quite significantly strong hydrogen bonds which need to be broken down. Yeah, so that is why you will need to unzip them, open them at certain points so that you can transcribe और डुप्लीकेट अ स्ट्रैंड. तो उसके लिए हम कब ये करते हैं, कब हम ये अनजिपिंग करते हैं? That's the question. 2 events in which it is unzipped. I have pretty much answered the question. First is when you want to duplicate one strand, that is DNA replication, yeah. And the second is when you want to transcribe that particular template strand. When you want to transcribe the template strand, that is also when you unzip the DNA, that is DNA transcription. DNA transcription is also another process in which this is done. Okay, guys? So that is why the 2 events are, number 1, DNA replication, and the second one is DNA transcription. Yeah. I hope that's absolutely clear, guys. All right, let's now move on to the second question. The second question is predict the consequences when both the template and the coding strands of a DNA segment participate in the transcription process. So, actually, if you know the reality of DNA transcription, you very well know that you only transcribe one strand. You don't transcribe both strands, right? You only transcribe the template strand, not the coding strand. Now, why do you do that? Why is it that we only transcribe one strand and not both strands? Yeah? Let's have a look at that. अगर सपोज करिए कि हम दोनों को ट्रांसक्राइब कर देते हैं. Let's suppose that both of them are transcribed. So if both of them are transcribed, what do you think can happen? Well, 2 very important things will happen. Number 1, you know that if 2 of them are transcribed, we'll get 2 different mRNAs. Okay, you'll get 2 different mRNAs from the same DNA, mind you, from the same DNA. These will further get translated to 2 different polypeptides, or like, in other words, 2 different proteins. So the same DNA molecule is giving you 2 different mRNAs and then 2 different polypeptides. So as a result, what happens is एक DNA आपको 2 polypeptide या 2 protein दे रहा है. तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि दिस विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इसके कारण क्या होगा? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो इतना डिस्क्रीट, इतना सिंपल है कि एक डीएनए तो एक प्रोटीन, सिंपल सी चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये इसको कॉम्प्लिकेट कर देगा कि एक डीएनए आपको 2 पेप्टाइड या 2 प्रोटीन दे रहे हैं. सो इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. स्ट्रेट ऑफ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एक डीएनए आपको 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड दे रहा है. दूसरी बात जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि गाइस आप खुद ही सोचिए कि मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है AGC, दूसरा है इसका A का T होगा, G का C होगा, C का A होगा. ठीक है, अगर आपने दोनों को ट्रांसक्राइब कर दिया तो एक mRNA क्या होगा? एक mRNA होगा, A का होगा U, G का होगा C and C का होगा sorry, this will not be C, this will be G. और
ये C का होगा G, ठीक है। ये एक mRNA। दूसरा mRNA क्या मिलेगा इस वाले से, आपको मिलेगा T का मिलेगा A, C का मिलेगा G और G का मिलेगा C। अब मुझे बताओ दो mRNA बन गए, A इस और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, उल्टा होगा बिकॉज ये खुद ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब मुझे बताओ A इज कॉम्प्लीमेंट्री टू U, G is complementary to C and C is complementary to G, तो as a result एक भयंकर बुड़बक हो जाएगा कि these will bond. When these will bind with each other, it will result in the formation of something called double-stranded RNA. It will result in the formation of double-stranded RNA. And the problem with double-stranded RNA is बन गया तो बन गया यार, क्या तकलीफ है। double-stranded RNA की problem is that it is non-functional. इसका function ही नहीं होता, it cannot work. It is non-functional mRNA. It is non-functional RNA. And since it is non-functional RNA, we say, हम ये कहते हैं कि that RNA is silenced. We say that this RNA is silenced. And this process is known as silencing of RNA. तो इसके कारण क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो गए तो you will get silenced RNA, that is non-functional double-stranded RNA. It cannot work, it is useless, it is worthless, it is just wasting your time, energy, and the precision of your genetic mechanism of the body. So it's straightforward that it will lead to dsRNA formation, which is non-functional, and hence it is useless. Hope it's absolutely clear, guys. These are two reasons why we don't transcribe both of them, and these are the consequences of the process if, in case, God forbid, it would ever happen. Alright guys, hope that's clear. Let's now move on to the next question. Okay, this question comes from, again, DNA structure, and it's a very straightforward, simple question for 2 marks. Let's see. Carefully examine structures A and B of pentose sugar. So there are pentose sugar molecule structures given to us in the diagram, right? And you know pentose sugar has the name pentose sugar because of the presence of 5 carbons. There are 5 carbon atoms, which is why we call it pentose sugar. Now there are 2 types of pentose sugar molecules, right? It's quite straightforward. There are 2 types of pentose sugar molecules. One is called your ribose sugar, and the other one is very similar in name, and if you understand the name, you'll understand the structure. It is deoxyribose. Now ribose and deoxyribose both are 5 carbon molecules, both have only 5 carbon atoms. But the problem here is that in this deoxyribose, it is deoxygenated. It does not have a particular oxygen atom. It lacks an oxygen atom. Now, what is that oxygen atom? This deoxyribose lacks a 2' OH group. अब इस राइबोस में क्या होता है? There is 3' plus 2' OH groups. Both are present. But in deoxyribose, only a 3' OH is present, 2' OH is absent. Okay. And because of that, this deoxyribose happens to be more stable. It happens to be more stable and less reactive. It is less reactive for this very reason, because it does not have that 2' OH, which makes it more reactive. Yeah. On the other hand, ribose is actually more reactive, and it is also more labile. Labile means it is easy, susceptible to change. It can change very easily. It can react very easily. It can break down very easily, right? So because of that, this ribose is very reactive and labile, whereas deoxyribose is more stable and less reactive because of the absence of the 2' OH group. Deoxyribose is the pentose sugar used in DNA, and obviously it is one of the very main reasons why DNA is actually very stable. It's because of the presence of deoxyribose instead of ribose, and this is the constituent pentose sugar of RNA, and RNA, you know, is much more reactive than DNA. It's quite straightforward now. Why? Because there is the presence of the ribose sugar, which is much more reactive. So following the same, let's answer the question. The question says which one is more reactive. Well, now let's identify which one is which. So let's number the carbons. This is 1. Sorry, let me use a better color. This is 1. This is 1. This is 2, 3, 4, and 5.
and this is 1, 2, 3, 4, and 5. So at the second carbon, this one has an OH, but at this second carbon, there is no OH, it's just H. That is why A has a 2' OH, and that is why it is your ribose, whereas B does not have a 2' OH. That is why it is deoxyribose. Yeah, straightforward. Now, which one is more reactive? I already explained to you. Ribose is more reactive. Why? Because of the presence of the extra 2' OH group. Hope it's absolutely clear, guys. If it is, do let me know in the chat box and do drop a like. Alright, guys. Hope it's clear. Let's now move on to the next question I have for you today. A lot of fun-packed, good revision questions for all of you for the board as well as the NEET examinations. Alright, here's another question from DNA, right? I'll leave this question to you for a practice. So this is your homework question, right? Do let me know in the comment section if you got the answer to this question, right? So do let me know in the comment section if this question you're able to solve at the end of the session. This is a homework question for all of you. Hi my cricket जोश, आप प्लीज मेरा कम्युनिटी टैब देखिए. मैंने वहां कहा है कि अगला सेशन आज 8 बजे है. कम्युनिटी टैब चेक करते रहिए. मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिटी टैब चेक करते रहिए. वहां मैंने डाला है कि आज 8 बजे सेशन है. ठीक है गाइस, तो ये तो बायो का है 12th के लिए. 8 बजे आज आपका 10th का सेशन है, तो प्लीज वहां जाकर के देखिए कम्युनिटी टैब पे. तो ये क्वेश्चन गाइस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन है. डू लेट मी नो द आंसर. मैं चेक करूंगा आप लोगों के आंसर्स वन बाय वन, राइट? Alright guys, let's now move on to the next question. Okay, now here is another question from transcription, and this is an important question for the board exam. बोर्ड एग्जाम में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन को, ये कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस of making heterogeneous nuclear RNA hnRNA into a fully functional mRNA in eukaryotes. So hnRNA जो है heteronuclear RNA, ये यूकैरियोट्स की एक स्पेशलिटी होती है. क्यों ये यूकैरियोट्स की स्पेशलिटी होती है? क्योंकि यूकैरियोट्स में जो इनिशियल एमआरएनए बनता है, जो इनिशियल एमआरएनए बनता है, उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस प्लस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, है ना? दोनों तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, coding plus non-coding. That is not the case in prokaryotes, but in eukaryotes both these type of sequences are present. The coding sequences are the exons and the non-coding sequences are called the introns. Both exons and introns are present in the newly formed nascent mRNA in eukaryotes, right? So that RNA is known as heteronuclear RNA, hnRNA. ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, ये आपको पता है. अब हमको क्या करना है? हमको इसको फुली फंक्शनल एमआरएनए बनाना है. तो उसमें हम क्या करते हैं ये हम समझेंगे. तो उसमें हम 2 मेन प्रोसेसेस करते हैं. पहला होता है स्प्लाइसिंग. अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया आपका जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए उसमें दोनों एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है. तो इसलिए आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस काटने पड़ेंगे ताकि आपका जो न्यू एमआरएनए बने उसमें सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस है, एज ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस, ओनली एक्सॉन्स, राइट? सो दिस इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. यू हैव टू रिमूव इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स का जो रिमूवल है दैट इज योर स्प्लाइसिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज the main processing part. Now जो ends हैं, because you have to transport this mRNA to the cytoplasm for translation. So when do you have to do this? How do you have to protect it during transport? Transport के time damage हो सकता है, transport के time mRNA टूट सकता है, खराब हो सकता है. How do you protect it? For that you use some measures, right? You give it lot of clothing. आजकल आप सर्दियों में बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है, तो मम्मी पहले अच्छे खासे कपड़े पहनाती हैं फिर बाहर भेजती हैं. Similarly, the nucleus of the cell is going to really protect the mRNA before it is sent out to the cytoplasm for translation. So how do you do that? You do it by 2 main processes. One is that in that RNA which is formed after removal of exons and introns, first you will have to add a cap so that it is protected from the action of exonucleases, from the enzymes which can degrade this RNA. So a cap is added. This cap is added, right?
This cap is made up of methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट MgPPP, मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हिल के नीचे जा रहे हो, मिथिल guanosine triphosphate. This cap is added, and this process of adding this cap is known as capping. You add a methyl guanosine triphosphate cap to protect it from exonuclease degradation. The third thing which you need to do is now you need to protect the tail also. अब सर बचा लिया, पैर कौन बचाएगा? पैर बचाने के लिए हम ऐड करते हैं कुछ रेसिड्यूज ऐड करते हैं. रेसिड्यूज मतलब छोटे छोटे टुकड़े ऐड करते हैं. कोई 200 से 300 छोटे छोटे टुकड़े ऐड करते हैं. किसके? एडेनोसिन रेसिड्यू, एडेनोसिन या एडिनिलेट रेसिड्यूज. यू ऐड एडिनिलेट रेसिड्यूज जो कि एडेनिन के ही बने होते हैं और इनका फंक्शन वही कैप वाला होता है. उसको एक्सोन्यूक्लियस, एंजाइम्स इस सब से प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो हमने टेल पर लगाए. टेल पर, ऑन द टेल यू ऐड एडिनिलेट रेसिड्यूज, 200 to 300 एडिनिलेट रेसिड्यूज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेलिंग. इसके बाद जो आपका आरएनए बनता है, इट इज फुली फंक्शनल एमआरएनए, कंप्लीटली प्रोसेस्ड, रेडी टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द सेल. एब्सोल्युटली परफेक्ट. So I hope this is clear, guys. Splicing, capping, tailing are the three processes carried out for this functional mRNA formation. Now, where does this all occur? अब तो आप समझ गए होंगे. It's quite straightforward. It occurs in the nucleus of the cell. ठीक है, guys? Hope it is clear. Nucleus में होता है ये सब. All right, guys. Let's now move on to the next question I have for all of you today. All right, now we come to the MCQs. जो भी multiple choice questions हैं for NEET, we're going to have a look at these particular questions. Now, these are important questions for NEET examinations, and they'll give you an idea किस तरह के questions आते हैं, कैसे हर चीज NCERT based ही होती है. Molecular basis में ज्यादा डरने की बात नहीं है. हर चीज conceptual है, हर चीज easily आप समझ सकते हो अगर आप अच्छे से conceptually पढ़ो. So let's have a look at this question. In eukaryotes, which of the following is removed from the initially transcribed RNA before it is transported to the cytoplasm for translation? So what is removed? I already told you, remove एक चीज होती है, add दो चीजें होती हैं. You add an MgPPP cap. So adding, what do you add? You add MgPPP का cap, methyl guanosine triphosphate cap, plus you add a polyadenylate tail, poly A residues, 200 to 300 polyadenylate residues. तो ये ऐड होते हैं. Removed क्या होते हैं? What do you remove? Well, you just remove the non-coding sequences. And what are those non-coding sequences called? They are called introns. They are called introns. And why are they even present? Well, they were present. They had some function before in unevolved human beings. अब उनमें वो function नहीं रहा है. That is why they are also called reminiscents. Reminiscents. इसका ये टेक्स्ट बुक सेंटेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी, रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी भी बोला जाता है इन्हें, बिकॉज दे रिमाइंड अस कि पहले एंटीक टाइम्स में इनका कुछ काम हुआ करता था. So what is the answer? The answer is straightforward. Introns are removed. Introns are the correct answer. Hope it's absolutely clear, guys. Thank you, Shafaq. Thank you so much. Hope it's absolutely clear, guys. Let's now move on to the next question we have for today. All right, चलिए अब आ जाता है question from very commonly asked फुल्लू questions from NEET. देखिए, the nucleic acid synthesis takes place in which direction? Now, here is one very important point I am telling you. You गांठ बांध के रख लेना. चाहे RNA polymerase हो, चाहे DNA polymerase हो. ठीक है, चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, चाहे ट्रांसलेशनल एंजाइम्स हो जो ट्रांसलेशन में काम आते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशनल एंजाइम्स ही क्यों ना हो, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अगर कोई भी जेनेटिक्स में एंजाइम होता है, that is 5 prime to 3 prime. Straightforward, straight answer, absolutely perfect. ये बात याद रख लो.
कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। सो द करेक्ट आंसर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसी डायरेक्शन में आपकी सिंथेसिस होती है। ये एक बात नोट करने वाली है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज हमारा होता है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ये आपने वर्ड पढ़ा होगा, बहुत कॉमनली इसे बोला जाता है, इट हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। बट इसका मतलब क्या है यार? इस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है कि बेसिकली अगर उस डीएनए पॉलीमरेज ने अपने पॉलीमराइजेशन के दौरान, अपने प्राइमर्स ऐड करने के दौरान, न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करने के दौरान कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड कर दिया, अगर उसने कुछ गलत न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड कर दिया, तो इसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो उसे रिमूव कर दे, काट के फेंक दे। ठीक है, रिमूव कर दे, एक न्यूक्लियस का काम करके उसको रिमूव करके रिप्लेस कर दे। तो इसको कहते हैं, क्योंकि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको रिमूव करना है तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई इसको कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो ये बात याद रख लो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में उसके पास न्यूक्लिक एसिड ऐड करने की एबिलिटी है, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्योंकि उसके पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है, वो न्यूक्लियेज का काम कर सकता है, एक्सोन्यूक्लियेज का काम कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड बेस निकाल करके वो एक सही न्यूक्लियोटाइड बेस वहां लगा सकता है। दैट इज द आंसर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर गाइस। शफाक, दिस सेशन इज फॉर मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा उस टाइम पर आप मियोसिस पूछिए, ठीक है? अभी हम मियोसिस की बात नहीं करेंगे, अभी दिस इज मोर अबाउट मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस। दीज आर फ्रॉम द वेरी डार्डली फियर्ड टॉपिक्स, ठीक है? हालांकि ये हैं कंसेप्चुअली कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें रटना बहुत पड़ता है। दिस इज एवरीवन्स ड्रेडेड टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां सबको लगता है रटना बहुत पड़ता है। टू सम एक्सटेंट आई अग्री, बिकॉज दिस इज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी, इट इज मोर ऑफ हिस्ट्री। तो पढ़ना तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इट सेज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू। तो अगर आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी कॉमनली कॉल्ड द एचजीपी, जो कि 2003 के दौरान स्टार्ट हुआ था या 1990s में ही स्टार्ट हो गया था एचजीपी। तो इसमें इन्होंने 2 तकनीकें अपनाई थी, ठीक है? दे इनिशियली स्टार्टेड ऑफ, और इनिशियली नहीं, दे हैड 2 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डूइंग द ह्यूमन जीनोम। इनका पर्पस क्या था कि हमको पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करना है, मतलब हर एक जीन का, हर एक सेगमेंट का, हर एक स्ट्रक्चरल जीन का, हर एक यूनिट का हमको फंक्शन पता रहना चाहिए। ये पता रहना चाहिए कितने बेसिस हैं, कितना डीएनए है, ये सब हमें पता लगना चाहिए, ताकि हमें मेडिकल फील्ड्स में या रिसर्च पर्पसेस में काफी काम आ सकता है, एवोल्यूशनरी स्टडी में भी काफी काम आ सकता है। तो उनका ये पर्पस था, दिस वाज देयर इंटेंट। Now to do so, to actually study, to actually sequence the genome, they had 2 methods. They took up 2 methods. The initial method was called expressed sequence tags, EST. ठीक है? इसमें इन्होंने क्या सोचा? इसमें इन्होंने सोचा that they will only sequence the exons. इसका मतलब है कि वो सिर्फ उन्हीं को सीक्वेंस करेंगे जो कि मैच्योर एमआरएनए में आते हैं। ये उन्हीं सीक्वेंसेस को, उन्हीं स्ट्रैंड्स को, उन्हीं पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंसेस को या डीएनए के सेगमेंट्स को सीक्वेंस करेंगे जिनके पास कुछ फंक्शन है, ठीक है? जिनके पास कुछ फंक्शन है या जो मैच्योर एमआरएनए में आते हैं, ठीक है? मैच्योर एमआरएनए में तो सिर्फ एक्सॉन्स आते हैं, तो वो सिर्फ एक्सॉन्स को स्टडी करना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरा मेथड अपनाते हैं जिसको कहते हैं एसे। एसे स्टैंड्स फॉर सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंस एनोटेशन में उन्होंने ये कहा कि भाई वी विल sequence the whole genome. We will sequence the whole genome and later on we can assign them with functions. So first sequence the whole genome, then assign functions. तो पहले उन्होंने सोचा कि हम पूरा जो जीनोम है वो सीक्वेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको फंक्शन जो है दे देंगे, मतलब बाद में उनको टैग लगा के बता देंगे कि ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन, ये हमारा काम आसान कर देगा।
जो कि सही था। तो आफ्टर दैट दे डिड सीक्वेंस एनोटेशंस, ठीक है। बट एक्चुअली इनिशियली उन्होंने ईएसटीज का यूज किया था जो कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस को स्टडी करता था, जो कि सीक्वेंसेस आरएनए में फुल्ली मैच्योर एमआरएनए में एक्सप्रेस हो चुके हैं, ठीक है गाइस। होप दैट्स क्लियर। सो लेट्स नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ESTs refers to DNA polymorphism is wrong, novel DNA sequences are wrong, correct answer is genes expressed as RNA. Absolutely perfect. This is the answer to this question. Genes expressed as RNA are known as the expressed sequence tags. That's it. Absolutely perfect. Let's now move on to the next question. The next question is also from HGP. Okay, and this is more about the results, the information which was derived from HGP. Let's have a look. Select the wrong statement. तो इनमें से कोई 4 बड़े factual statements दिए गए हैं, इनमें से हमको select करना है कि कौन सा statement सही है, कौन सा statement गलत है. Let's see. The human genome contains 3164.7 million nucleotide bases, which we very commonly approximate to 3 billion bases. This is a correct statement. Obviously, there are 3 billion bases. Absolutely right. The next one, less than 10% of the genome codes for प्रोटीन. अरे ना बाबू, बहुत आगे निकल गए. 10% जीनोम नहीं, केवल 1% जीनोम करता है. नॉट लेस देन 10, लेस देन 1%. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एनसीईआरटी की लाइन रटी रहनी चाहिए, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे. बट लेस देन 1% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, लेस देन 1%, दैट लेस. तो बाकी जीनोम तो कूड़ा है, या उसका अभी तक हमको फंक्शन पता नहीं चला है. बाकी भी देख लेते हैं. पार्ट 3, repeated sequences make a very large portion. Absolutely right. Almost 99% of the sequences are repeated sequences. And chromosome 1 has the most gene, 2968, while Y has the fewest, 231. This is also absolutely right. So the correct answer is 2. That actually there are less than 1%, not 10%. It's less than 1% of the genome that codes for protein. Hope it's absolutely clear, guys. I hope these questions are clear. And these are from actual पेपर्स. ये मैंने कोई हवा में नहीं बनाए हैं, एक्चुअल पेपर से क्वेश्चंस हैं. तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए. होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर गाइस. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू टुडे. Okay, this question again comes from genetic code. Genetic code is a classic favorite of any exam, right? Let's have a look. Under which of the following conditions will there be no change in the reading frame? तो आपको पता है reading frame में change कब नहीं होता? Reading frame में change तब नहीं होता है जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को 3 के मल्टीपल्स में ऐड कर रहे हैं. न्यूक्लियोटाइड्स एडेड इन मल्टीपल्स ऑफ 3. क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा you will just add one new amino acid in that chain, but otherwise the whole chain will remain the same. It will not be affected क्योंकि reading frame वही का वही रहेगा. reading frame change नहीं होगा. This is clearly from frame shift mutations that if you add in multiples of 3, then the reading frame is unchanged. So let's have a look. 1, insertion of A and G. No, you're adding 2, you're not adding 3, so that's wrong. Deletion of GGU, yes, you can add or delete. You can add or delete in multiples of 3. And since you're deleting 3 bases at a time, then it will not change the reading frame. So the correct answer is 2. Insertion of G, no, you're adding a single one, so it will lead to a frame shift mutation. Deletion of G, no, it will lead to frame shift mutation. So deletion or addition in multiples of 3 will not lead to frame shift mutation, and that is why 2 is the correct answer. Let's now move on to the next question, guys. This is from AIMS 2019. This question was from AIMS 2019. Again, an emphasis on how easy the questions are from this chapter. Choose the correct statement. Let's see. Transcription and translation occur in the same compartment for prokaryotes. This is a correct statement. This is absolutely correct. Now, why is this correct? It is absolutely correct because prokaryotes have no nucleus. They have no nucleus, no specifically bound nucleus. So that is why both transcription and translation happen in the cytosol. They both happen in the cytosol. And since they both happen in the cytosol, well, there is just a single compartment in which they occur. And that is why the correct answer is 1. बाकी भी देख लेते हैं क्यों गलत है. Monocystronic RNA, more than one structural genes under single promoter. This is incorrect. It is not under single promoter, it is under multiple promoters. That is why आपका जो Lac Operon था उसमें there was more than one promoter. So actually there are more than one promoter in monocystronic RNA. Next, introns and exons both code correct. Kuda. Absolutely kuda option. Next, in prokaryotes splicing and tailing occurs before translation. Nah. Prokaryotes में splicing tailing कब होती है? होती ही नहीं है. Because
इट इज कपल्ड. अगर ट्रांसक्राइब mRNA होकर के आ रहा है, फटाफट उसको साथ ही साथ ट्रांसलेट कर लिया जाता है. दे आर एक्चुअली कपल्ड बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग in prokaryotes, क्योंकि they don't have any intron exon problem and other nonsense. ठीक है guys, so that is why the correct answer is 1. Transcription translation occur in the same compartment for prokaryotes. Alright guys, hope that's absolutely clear. Let's now move on to the next question of the day. चलिए guys, अगले question की ओर चलते हैं. This is again a simple question from DNA RNA structures. Let's see. Purines found in DNA and RNA is. So guys, इसमें आप basic concepts से चलिए. आपको पता है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट? नाइट्रोजन बेसिस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव. वन टाइप इज कॉल्ड प्यूरीन एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड pyrimidine. ओके, नाउ इनका मतलब क्या है? प्यूरीन मींस देयर इज मोर देन वन रिंग इन द स्ट्रक्चर, देयर इज मोर देन वन रिंग. Pyrimidine means there is only a single ring, and that ring is actually a derivative of pyrimidine. Actually. Now what is pyridine? Pyridine is a very common organic compound. This one. This is pyridine. और इसी के ये derivatives होते हैं, और क्योंकि ये इसके derivatives होते हैं इसलिए इन्हें pyrimidine कहा जाता है. ठीक है? अब प्यूरीन दो तरह के होते हैं, गुआनीन एंड एडेनिन. कोई भी हो, आरएनए या डीएनए, प्यूरीन्स आर ऑलवेज गुआनीन एंड एडेनिन. बट पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, और ये मैं इसलिए याद रखता हूं क्योंकि पिरिमिडीन नाम लंबा है, इसलिए इसमें चीजें भी ज्यादा हैं. सो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन तीनों होते हैं. ठीक है, लेकिन यहां ये होता है कि साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ, बट यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एंड थाइमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए. ठीक है गाइस, क्लियर है? तो ये दोनों में है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ. यूरासिल ओनली आरएनए, थाइमीन ओनली डीएनए एंड साइटोसिन इज इन बोथ. बट हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? हमें पूछा गया है प्यूरीन्स. प्यूरीन्स तो हमेशा दोनों हर एक में होते हैं. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज एडेनिन एंड गुआनीन. ऑप्शन 4 is indeed the correct answer. Hope it's absolutely clear guys. Option 4 is the correct answer. Adenine and guanine. Alright guys, hope it's clear. Let's now move on to the next question we have. And this is a little tricky, but again a simple question from AIMS 2019. Okay. इस क्वेश्चन में आप एक कॉमन सेंस की बात लगाएं तो ये आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. आप मुझे बताइए, if you have a brick and you have a wall, which is bigger? Is a brick bigger or is a wall bigger? Brick is the building block of a wall, but the wall, which is made up of all these bricks, is obviously, common sense say, much bigger. So the wall is bigger than the brick. This is the concept in this question, that the unit, the basic unit, is smaller than the overall structure. This is the basic concept you need to follow in this. That's absolutely it. अब देखना कितना इजी हो जाएगा. अब न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, जीन और जीनोम की बात की गई है. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए. Many nucleotides can come together to form a segment of DNA. Now, what is a segment of DNA called? It's called a gene. Many genes can come together to form a chromosome upon packaging. So many genes come together to form whole DNA. That whole DNA can be packed to form chromosomes. And then many chromosomes, many chromosomes, when they come together, they form the entire genome of the human being or of the individual or of the organism. So nucleotide is the smallest, then gene, then chromosomes, and then the largest is genome. So order देखो, nucleotide, gene, chromosome, genome. Option 4 is the correct answer. Hope it's absolutely clear guys. Simple, straight, sweet question. Alright guys, let's now move on to the next question I have for all of you. This is another good question, the first one. This first question is a very good question from AIMS 2019. This question is particularly good
Because lot of students will say कि यार they damn expect you to learn that table of 64 codons. But the case is that you don't need to do that. Why? Let's see. It says, what is the genetic code of proline? Now, proline is an amino acid. Okay? Proline is an amino acid, right? And they are asking that there are many genetic codes which can code for proline, obviously because the code is degenerate. So, which of these code for proline? Guys, if you just look at a general codon, if you look at a codon, in general a codon, it has 3 positions, right? Okay, 1, 2, 3. Now, suppose you have A, or let me give something which is easier for you or more relatable. तो कोडॉन है, कोडॉन के 3 पोजीशंस होते हैं, 1, 2, 3, जॉर्ज गैमो ने कहा था. और आपको ये तो अच्छे से सबको याद होगा कि यू जो है इट कोड्स फॉर फिनिलएलेनिन. ये जो है इट कोड्स फॉर फिनिलएलेनिन. ठीक है. अब देखिए ट्रिक क्या है. अगर मैं इस U को निकाल दूं और एक A लगा दूं, पता है, अगर मैं इस U को निकाल दूं और A लगा दूं तो UUA बनता है. क्या बनता है? UUA बनता है. अब मुझे बताइए UUA codes for which amino acid? Can you guess? UUA codes for leucine. But if I replace it with C instead, then it's been seen that UUC codes for phenylalanine again. Same way, if I change this A to G, it's been seen that UUG codes for leucine again. So the point I'm trying to make here is that if you actually keep the first 2 points constant and just change the last one, if you change the last one, then the probability, I am reiterating, the probability of the overall codon to still code for the same amino acid is much more. It is much more. And this is very commonly known as the wobble hypothesis. So the wobble hypothesis states that, it is a hypothesis after all, it's just a hypothesis. It states that the wobbling ability or the changeability of the third position of a codon is much more as compared to the other positions. So if you change the third position of a codon, there is a much greater chance that it codes for the same amino acid. This is clearly from wobble hypothesis. ठीक है गाइस, क्लियर है? अब मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, देखिए. पहले ऑप्शन में only the third position is different and the other 2 are the same. So there is a greater chance that they 3 will code for the same amino acid. ठीक है guys, there is a greater chance. And wobble hypothesis के कारण ही code degenerate है. ठीक है, wobble hypothesis is the reason why the code is degenerate. तो अगर पहले वाले में आप देख रहे हैं कि third position is different but the others are the same, that means it is the greatest chance for them to code for proline, and that is why the correct answer is 1. बाकियों में देखिए CUU, UCA, CUG, absolutely कूड़ा, कहीं से भी ये मैच नहीं करने. Third, GUU, GUC, GUG, this one is a bit tricky because here also the first 2 are the same. ठीक है, but you guys must remember, आपने सिकल सेल अनीमिया पढ़ा है, GA, G to GUG change हो जाता है, point mutation, that is your one amino acid gets converted into valine. This gets converted into valine. This should actually code for some other amino acid, right? But this gets converted into valine. ठीक है? Glutamic acid gets converted into valine. GUG codes for valine. So this is absolutely wrong. And GUC, GGA, this is not following wobble hypothesis at all. So the correct answer is 1. The clear thing to take home here is the wobble hypothesis. Is a beautiful method of predicting this. अब यहाँ पर एम्स ने गेम खेला है कि they have given you 2 options where the wobble hypothesis is possible, but the third position, well, the third option, well, if students have studied NCERT, well, they know that GUG is the cause for sickle cell anemia, and that is why third cannot be the correct answer. First one is absolutely the correct answer. That's it.
Let us now move on to the next question, guys. The next question is from DNA structure once again. Again, it's from AIMS 2019, and this is a little tricky but a simple question. Let's see. It says DNA polymerase links nucleotides by forming which bonds? Now, यहाँ देखो glycosidic तो कोई नहीं बोलेगा. Everyone knows that very well. Ester भी कोई नहीं बोलेगा. The problem is people get confused between phosphodiester and hydrogen bonds. For that, you need to be very clear how that structure is, how that bonding is created. So you know very well कि the DNA polymerase molecule, it goes straight along the like DNA strand and adds nucleotides like this. Okay. Now it links them together like this. It doesn't link them together like this. ये नहीं करता है. It links them together straight like this. अब straight between nucleotides क्या bond होता है? Hydrogen bond होता है ना. Hydrogen bond is between base pairs, nitrogen base pairs. So it is not hydrogen bonds. The correct answer is phosphodiester bond. क्यों? क्योंकि इस वाले में और इस वाले में दोनों में एक phosphoester bond होता है और एक ही phosphate दो phosphoester bonds बनाता है, इसलिए उसे phosphodiester bond बोलते हैं. That is why the correct answer is 1. Absolutely perfect and easy to answer. Hope it's absolutely clear, guys, and if you're clear with it, do let me know in the chat box and like this video. Alright guys, let's now move on to the next question. If I have any, वो check करना पड़ेगा, जरा देखते हैं. Yes, there are a few more from assertion reason, and this is again from AIMS 2019. These questions are again from AIMS 2019. AIMS में आपके लिए पहले आया करते थे assertion reasons, but now AIMS, NEET, JIPMER सब एक ही exam NEET हो गए हैं, ठीक है, from this year. That is why there is no AIMS and all. But these questions used to be of very good level, so they can come back in NEET. Let's have a look. It says, assertion is in eukaryotes transcription occurs in the nucleus. It's absolutely right. It does. I've explained this to you. In bacteria, transcription and translation occurs in the cytoplasm. Yes, I've told you this as well. It's correct. Why? They both occur in the cytosol because they don't have a nucleus. Right? So दोनों हैं तो सही statements, but do you think the second one is an explanation of the first? No, it's not an explanation. These are just two different statements which are being made. So the explanation की तो बात ही नहीं है. It's not the correct explanation. So B is the correct answer. Both are correct statements. There's no doubt that both are correct. But they are not reasons. They are not complementing each other. They are not even related to each other. So the correct answer is 2. 2 is the correct answer. The next question is again an AR question, assertion reason, and this is a bit tricky. Tricky भी नहीं है, concept आता तो it's very simple. Let's see. Assertion: in eukaryotes, both introns and exons are transcribed to form NH and RNA. This is absolutely right. Eukaryotes में तो split gene arrangement होता है. This is called, by the way, this word is used to describe this exon-intron arrangement. It's called a split gene arrangement, and that is seen in eukaryotes. So absolutely fine. It's correct. Reason: splicing is required in prokaryotes. अरे भैया, reason है कि नहीं वो तो बात की बात है. Splicing prokaryotes में तो होती ही नहीं है. Because splicing is a characteristic of eukaryotes. And why is it a characteristic of eukaryotes? Why? Because of the split gene arrangement. क्योंकि split gene arrangement है इसलिए eukaryotes ये दिखाते हैं, and that is why उनमें ये जरूरत होती है, but prokaryotes में तो इनकी जरूरत है ही नहीं, because prokaryotes में there are no introns. So that is why the reason is wrong itself. So assertion is true that eukaryotes do have introns and exons to form hnRNA, heteronuclear RNA, but the reason is incorrect. So 3 is the correct option. The assertion is true, but the reason is false. Hope it's absolutely clear, guys. And with this, I think we are done with the questions for today. Thank you very much for joining me, guys. I hope you all enjoyed. I hope you all had a good time. And if you do still have any kind of doubts, please let me know in the comment section, guys. Like, share and subscribe to the channel. We will be back with more lectures on the class 12 biology sprint. I hope you all are enjoying the sprint. Do let me know in the comment section. और जो practice question दिया है homework के लिए वो solve करके उसका आंसर बताइएगा. So goodbye, take care, stay healthy, stay smart. You can find the playlist of the biology sprint in the description. Do keep studying. Any doubts are welcome, and goodbye.